Guys, welcome back to another World Cup edition video podcast of the El Clasico Football Hub. We have officially entered the business end of the competition. इसमें थोड़ा मामला गर्म होने लगता है. तो अभी आदित्य, how's the जोश? The जोश is very very high. सुबह थोड़ा सा नींद ज्यादा रहता है, जोश कम. But World Cup takes care of it, so जोश is very high right now. Before we dive deeper into the matches that have happened, let's talk about general feeling. अभी तक वर्ल्ड कप देख के कैसा लग रहा है? Is it better than the last World Cup? इस वर्ल्ड कप की क्या मेजर हाइलाइट्स लग रही है अभी? मेरे अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड कप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बाहर अब तक होके आई है, इट लुक्स लाइक कुछ फीफा ने या तो ब्लैक मैजिक किया है या तो कुछ तो हाई लेवल फिक्सिंग चल रही है, पता नहीं. क्योंकि हर मैच इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है, राइट? देयर आर नो मिनोज इन दिस वर्ल्ड कप. ऐसे कोई फेवरेट दिख ही नहीं रहा मुझे, राइट? इंग्लैंड वर्सेस डीआर कॉन्गो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इट विल बी सच अ क्लोज मैच, राइट? अभी लास्ट नाइट एज वी आर शूटिंग दिस, अर्जेंटीना वर्सेस कैप वर्डे, राइट? मतलब उस मैच में डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियन को एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ा एक ऐसी टीम के साथ जिसका पॉपुलेशन लाजपत नगर जितना है, राइट? तो इतना भी कंपटीशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई थिंक दैट हैज बीन द रिकरिंग थीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर फैंस आउट देयर, क्योंकि उनको हर मैच इंटरेस्टिंग मिल रहा है. बट द फ्लिप साइड ऑफ दैट इज देयर आर नो फेवरेट्स देन इन दिस वर्ल्ड कप, barring I think France, who is doing ultra good. I think that they are the team to look out for. मुझे उनमें अब बात करेंगे उसके बारे में, but they are flawless right now. Godspeed to them or good luck to anyone who is facing them. So that's my overall take on this World Cup till now. What's your take? मेरा भी सिमिलर है. मेरा ऐसा था कि I had some apprehensions leading up to this World Cup. मुझे था कि वेदर कैसा होगा in the United States, अरेंजमेंट्स कैसे होंगी, वाइब्स कैसे होंगी, एक्साइटमेंट वहां पे होगी कंसिडरिंग फुटबॉल इज नॉट दैट ह्यूज देयर, है ना? पर उस सेंस में आई थिंक द वर्ल्ड कप इज गोइंग गुड. अभी तक ऐसे कोई इश्यूज आए नहीं है कि मे बी पिचेस से रिलेटेड या फिर वेदर से रिलेटेड, और कमेंट्री से भी रिलेटेड हमारे डाउट्स थे, तो कमेंट्री हैज आल्सो बीन गुड. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस हैज बीन गुड. आई आल्सो लाइक द फैक्ट कि कोई भी यहाँ पे मिनोज नहीं है, काफी डार्क हॉर्सेस निकल के आए. I'd like to talk about Japan. Japan ने ब्राजील को almost knockout कर ही दिया था. One more thing that is very interesting in this World Cup is generally जो फुटबॉल है ना, that is centered around Europe, right? तो लोगों को पता भी नहीं है कि what is happening in African countries, what is happening in Americas, right? अमेरिका में फिर भी तुम्हारे पास अर्जेंटीना, ब्राजील की वजह से people are still aware about them, right? But what is happening in Africa वो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, right? This World Cup is a good reminder that that football is not about the player stature or team stature. It is actually about that ball in the game and actually, dying on the field wala thing, right? So I think Germany के किमिक या किसी ने बोला कि एक स्टेटमेंट दिया था कि द बैड पार्ट अबाउट आवर परफॉर्मेंस वाज दैट हम एक बहुत ही लो लेवल साइड हु आर नॉट फुटबॉलिंग गुड साइड के अगेंस्ट ऐसा परफॉर्म किए. बट देन देयर कमेंट्री वाज if you would have lost the match, we would have died on the field. So right, I think this is a good segue to then talk about कि ये तो themes थे, but what was that one match you take out of this round of 32 which kind of you will keep in memories till the next World Cup comes around? यार I like to talk about an emotional match. मेरे लिए इमोशनल मैच था पोर्चुगल क्रोएशिया, क्योंकि एक साइड थे बड़े भैया हमारे रोनाल्डो भैया और एक हमारे लेजेंडरी लूका मॉड्रिच, जो वर्ल्ड कप के अंदर ही हैज हैड एन इम्पेकेबल पेडिग्री. उस क्रोएशिया ने इन द पास्ट हैव आई थिंक नॉक्ड आउट अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस तो नहीं, फ्रांस से हार गए थे, बट मेजर अपसेट्स किए थे. तो इस बार डर था कि बड़े भैया बाहर हो सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट हो भी गए. But it was a great match. I think last में 2-2 हो भी गया था in the extra times last minute. But उसके बाद I think offside rule out हो गया था. But it was a great match. I think Portugal को first real scare मिला है. And so I think मेरे लिए वो match सबसे अच्छा था अभी तक. What about you? Yeah, I mean, that match of course was good. Just like almost all the other matches. वो भी एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है. सो फॉर मी हाउएवर अ मैच टू लुक फॉरवर्ड वाज मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड्स.
For all our followers, I'm supporting Spain, followed by Morocco. So I'm a big fan of Morocco in this World Cup. That match was special because उसमें बहुत कुछ ऐसे build up for the match था, right? Almost same stature की teams meet कर रही थी. That was good. Then कोडी गैपको का एक हिस्ट्री हो गया था ऑन द वीकेंड, यू नो, उसकी फैमिली में द न्यू बॉर्न वाज अ स्टिल बॉर्न और मेजर ट्रेजेडी इन हिज लाइफ. ही देन केम, रिप्रेजेंटेड हिज नेशन और उसने फील्ड पे एक गोल मारा, राइट? ही वाज द डिफरेंस मेकर. He was almost the difference maker. Everything was, you know, so emotional, that how you represent the game and you represent your country and still go on to, you know, perform after these kind of tragedy and life moves on. But then life is always not fair. Morocco came back, Diop ne वापस goal mara, and it all became so electric atmosphere. So it was like a quintessential football match. What was best or the most exciting part was the roles goalkeepers had to play in this match, right? They full on football feeling tha, right from defense, attack to the goalkeepers as well, wherein Bono ne I think saves kam kiye honge, maybe ek save kiya hoga, but he got into the head of players, right? तो ऐसा नहीं था कि just he did not make saves of players ने miss किया, ऐसा नहीं था. He got into the head of the players and made sure that they miss all those goals or all those penalties. So it was like an end-to-end full football experience for me. Peak football, irrespective of ये किसी Champions League match से compare कर लो या किसी World Cup match से compare कर लो. This is what football means to me. I think once it went to penalties, उसके बाद I knew कि Bono is going to play a huge part here. Penalty specialist है Bono, and काफी underrated है for especially Premier League fans जिन्होंने नहीं देखा Bono को. हमने La Liga में काफी देखा. Now, before we discuss about the next round of matches, if you like our content and are interested in general football analysis and World Cup content, make sure to like this video and subscribe to the channel. चलो, ये तो होगी पुरानी बातें भूल जाते हैं. अब आगे की बात करते हैं. We have 8 fixtures, round of 16 fixtures, some cracking fixtures. I'm going to talk about these fixtures one by one and let's discuss कि हमें क्या लग रहा है going forward. So first one is Paraguay, France. I think this is a very easy win. I think they'll make a statement. ये एक मैच आया था, ब्राजील वर्सेस जर्मनी वाला मैच था. उससे भी अगर ज्यादा गोल पढ़ सकते हैं तो इसी मैच में पढ़ सकते हैं. But let's see. So I think France is a clear winner from both. France is a clear winner. Second one is Canada, Morocco. I think Morocco is strong. Morocco is strong. I think मतलब ये इंटरेस्टिंग जा सकता है in the sense that because ऐसा वर्ल्ड कप पैन आउट हो रहा है कि मैचेस आर गेटिंग इनटू एक्स्ट्रा टाइम, so I don't want to discount Canada, but strongly rooting for Morocco. I think Morocco will come out as well. I also have Morocco as my favorite. I think Canada का थोड़ा home advantage हो सकता है, but Morocco is too strong. उसके बाद we have the big one, the biggest one. Portugal, Spain. Portugal, Spain. I think इस पे बात करनी पड़ेगी. Portugal, Spain is going to be one messy affair. और ये MESSY वाला मेसी है. ये बड़े भैया का नेमेसिस मेसी नहीं है. कुछ भी हो सकता है इस मैच में. मैं मतलब इसमें I know I'm following Spain. Spain is my favorite. So I'll go for Spain. But it is not as easy as it looks like. I think बड़े भैया का एकदम पीक परफॉर्मेंस देखने को हमें मिल सकता है. I would say if Portugal operates as a team in this match, right? Not the Portugal जो अभी तक दिखती आ रही है. João Neves is saying something, or you know, team थोड़ा divided लग रही है. If a team level Portugal comes in this match, Spain are going to have a very very hard time. However, Spain is more of a team right now. So मुझे लग रहा है, and Oyarzabal हम पहले भी बात कर रहे थे अपने last podcast में, while Spain misses that attack like a pure play striker, Oyarzabal has been damn effective, right? So I would still give Spain the edge because of the control they bring to the table, the wing that they have. So I will give them the edge, maybe Spain for me. 51-49 Spain for me. 51-49 to Spain. Yeah. यार मुझे ऐसा लगता है, I think first of all this is the closest thing to El Clasico that we could have had in World Cup, है ना? So I think every Madrid fan would be supporting Portugal and every Barcelona fan would be supporting Spain.
So here goes, I'm supporting Portugal. But यार मुझे लगता है थोड़ा सा, so Spain has it all figured out. I think उनका अभी तक performance every match has been really good, and every match में ऐसा लगा नहीं कि वो थोड़े doubts भी आ रहे हैं उन पे. They're been clear winners, है ना. पर मुझे लगता है Portugal has still some things to figure out. अभी tactically भी they have to figure out certain things, क्योंकि last match में भी they played Rafael Leao. पहले दोनों मैचेस के अंदर they played someone else, है ना. नेटो खेला था शायद, और लास्ट मैच में बर्नार्डो सिल्वा को खिलाया था, उससे पहले नहीं खिलाया था. तो आई थिंक दे स्टिल फिगरिंग आउट, बट आई अग्री विद योर पॉइंट कि ना स्पेन प्लेज मोर एज अ टीम. पोर्चुगल स्टिल अभी ऐसा लगता है कि दे आर डिसजॉइंटेड, कि मिडफील्ड और अटैक अभी कनेक्टेड नहीं है इतने अच्छे से. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इफ समवन कैन pull off a win against Spain, it's Portugal. I'll be rooting for Portugal. Let me put it this way. अगर स्पेन ने पहला गोल मार दिया तो आई थिंक इट्स कर्टन्स, ठीक है, क्योंकि स्पेन नोज हाउ टू कंट्रोल द गेम, स्पेशली इन दैट हीट. अगर स्पेन एक गोल मार देती है, उसके बाद पोर्चुगल सिर्फ बॉल चेजिंग करता रहेगा और they'll eventually be tired. उसके बाद स्पेन will score the second goal. बट अगर पोर्चुगल ने पहला गोल मार दिया, आई थिंक उसके बाद आई थिंक पोर्चुगल really good chances to go through. So the next match we have is USA Belgium. I think USA is going to go through. USA. मतलब I was hoping कि हम अलग-अलग डिस्कस करें, like contenders बोले और फिर इस पे डिस्कशन हो, but I think both of us are USA. It tells the dire state Belgium is in right now. I think Pochettino को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा. He has done a really good job with USA, and with the advantage, I think USA goes through. The next one is Vinicius and Haaland, Brazil Norway. I think Brazil, you'll have to give Brazil. Brazil. थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है मुझे, and the only reason for that is Brazil का मुझे थोड़ा डिपेंडेंसी ऐसा लग रहा है on Vinicius Junior. So if Vinicius doesn't show up, Brazil suddenly feels very light to me as a team. क्योंकि उनके पास वो edge हर मैच में it's Vinicius. So, but the same is not true for Haaland. Haaland can ghost you the entire match और उसे वो एक दो मौके मिल गए, he will make sure he scores 2 goals, right? और जैसा वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर 2 गोल पड़ गए तो this means that at least you are going to extra time or you are winning the match, right? तो while it is Brazil on paper, but I would like to go for Norway right now. No, यार मुझे ऐसा लगता है अभी तक the good moments that Norway has had have always been in the air, मतलब as an aerial threat. They have good aerial threat players, है ना, Haaland, Sorloth, and a good players to cross the ball in. But I think in that department Brazil is sorted. Gabriel इनका एक shooter अच्छा है, Marquinhos अच्छा है, then Casemiro है to protect the space. So I think वो threat they'll be able to avoid, and it's just about scoring. I think वो scoring उनको थोड़ा figure out करना पड़ेगा. If they score first, I think Norway is going up. Yeah. I think like Brazil है, like mostly it is Brazil, but थोड़ा सा मैं edge देना, not edge, but थोड़ा सा discussion up है only because if it's not a Vinicius day. So let's see. The next match we have is Mexico and England. What about that? This is one, I would say, maybe second best match of this entire round of 16. Mexico versus England. I think ये Mexico England वाला हमने अपने prediction में भी किया था when we were doing that first podcast. तो ये वापस वही repeat हो गया. So we predicted well. और तब मैंने Mexico कहा था. I still want to go with Mexico because of maybe my rivalry with Premier League and all the English वाला पूरा setup. But seeing the form Harry Kane is in and how lethal he can be and create something out of nothing at moments. He's not like Haaland wala striker ki उसे ball चाहिए और he will tap in, right? He's that intelligent old breed striker wala भी thing है उसमें. तो seeing that form, I'll revise that and will give the edge to England. लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा, like my brain says England, my heart says Mexico. So that's my take for this match. यार मुझे ऐसा लगता है एक तो मेक्सिको के अगेंस्ट मेक्सिको में खेलना बहुत टफ है, क्योंकि उनके स्टेडियम्स आर आल्सो एट एन एल्टीट्यूड. तो उस क्लाइमेट या फिर उस कंडीशन से भी फेमिलियराइज करना थोड़ा टफ होता है फॉर द न्यू टीम्स.
England would be going to Mexico for the first time, so new conditions होंगे उनके लिए completely. Having said that, I think England has a well-rounded team this time. They have good defenders, good attackers, good midfielders. तो all round थोड़ा अच्छी team है. It's not great, but अच्छी team है. एक important thing England did in the last game was they were chasing the game and they eventually could turn around the match. I think ये एक बहुत underdogged चीज रहती है. In moments of adversity, जो teams turn around कर लेती हैं ना, वो World Cups में बहुत आगे जाती हैं. So just for that performance against Congo, I'll give the edge to India. Moving on to the next match, we have talked about बड़े भैया. We have to talk about छोटे भैया now. Messi versus Egypt, Argentina versus Egypt. क्या लग रहा है? एक तो अभी तक जो अर्जेंटीना का पाथ है, it seems like the easiest one in World Cup. So Correct. Egypt भी you would want to say कि इतना tough team नहीं है, तो I think अर्जेंटीना को इतना difficult नहीं होना चाहिए. I agree. मतलब if we want we can discuss it, but मेरा point है in the end we both will come to the same conclusion that it's Argentina. हाँ, पूरा वर्ल्ड कप ऐसा है कि अब केप वर्डे भी एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है, so we can't predict of course, but looks like this match has Argentina stamped all over with a hot form Messi is in. Eventually it will be छोटे भैया coming out on top. Next match we have is Switzerland Colombia. Shakira. I think it will be Colombia for me. So I'll go with Colombia. I don't have any other thoughts on this one. मेरा भी I think Colombia. I think both my heart and brain says Colombia. My heart says Colombia क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेसी को नेक्स्ट राउंड में कुछ तो कंपटीशन मिले. स्विट्जरलैंड भी इजी मिल जाएगा तो फिर फायदा ही क्या है. I think Colombia has been doing good in this World Cup. They have good players. Diaz has been playing good. So I think Colombia takes it.